Yes, good morning, all of you. The next topic is forearm, interior compartment of forearm. So we have completed pectoral region, back, interior compartment of arm, posterior compartment of arm. We have completed, and we don't know how much you have completed. You have grabbed the topic or not. अभी तक समझ में आ रहा है सबको? लोकेट कर पा रहे हो स्ट्रक्चर कैडेवर में? Are you able to identify all the structures? तो यहाँ लेक्चर में जो आप पढ़ रहे हो, then you have to apply it on the cadaver and then you will apply further in where you are going to apply this knowledge. Everywhere. Anatomy आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी. Whatsoever subject you choose, anatomy is always important. Human structure आपको basic पूरा पता होना चाहिए. Obviously surgical process में तो ये है ही important, most important. आपको पता होना चाहिए जब आप incision दे रहे हैं तो उस जगह पे कौन से structures lie करेंगे. So our topic for today is interior compartment of forearm. Yes. Keep coming. The fascia for the forearm. The fascia is known as antebrachial fascia. Now this fascia along with the interosseous membrane and muscular septum. बंद कर दो अब गेट. बंद कर दो. Close the door. Along with the intermuscular septum divides the forearm into two compartments, anterior compartment and posterior compartment. So we are going to deal with the interior front of forearm. So objective for the today's topic, what are our objectives? So at the end of this class you must be able to list the names of all the flexor groups of muscles. You must be able to identify the common flexor origin of flexor muscles, their insertion, innervations, their actions. You must be able to describe course of radial artery, ulnar artery, medial, radial, and ulnar nerve in the forearm. And you must be able to enumerate the structure lying in front of the wrist. These are the objectives and these are my expectations. Rest is up to you. Now forearm, it extends from the elbow till the wrist. It possesses two bones, radius and ulna. All of you have seen in the skeleton also. So there is a space between these two bones which is occupied by the interosseous membrane. Superior and inferior radioulnar joint permits the movement of the supination and pronation of the forearm. Yes? Now facial compartment of the forearm. The forearm is enclosed in a sheet of a deep fascia which is known as antebrachial fascia. Now this facial sheet together with the interosseous membrane and intermuscular septum divides the forearm into anterior and posterior compartment. Interior and posterior compartment. Now what is the movement taking place over here? Which type of movement? Flexion. So this particular surface is the flexor surface. So the group of muscle present over here in the front of the forearm are the flexor group of muscles. So they act on the elbow and the wrist joints and at the joints of the fingers and produce flexion. They form fleshy masses in the proximal part and become tendinous in the distal part. In front of the wrist, you can feel the presence of the tendon over here. So these muscles have a bulky mass in the proximal part and in the distal part they are tendinous. Okay, so now what are the groups of the muscles present in the front of arm? So in the older method, we used to divide them into two groups, superficial and deep. Okay, so superficial group of muscles from the lateral to the medial sides, they are pronator teres, then flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, and flexor carpi ulnaris. But one of these muscles, flexor
digitorum superficialis is little bit deeper than as compared to all these superficial muscles. So hence we can also add one more compartment over here, intermediate group of muscles. So this flexor digitorum superficialis is included in the intermediate group of muscles. Now deep group of muscles consists of three muscles: flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus and pronator quadratus. अब आते हैं इसके nomenclature पे. Because the most difficult part of the anatomy is to remember the names. The nomenclature of the muscles is either dependent upon the shape of the muscle, whether it is short or long, and also depends upon origin and insertion, and also depend upon the what kind of action it produces. Okay, so you don't have to ratify all these names. One by one we can discuss the names of these muscles so that you can remember. Now the first muscle on the lateral side is pronator teres. You have also read this in the cubital fossa. It forms the medial boundary of the cubital fossa. Pronator teres. As the name suggests, teres is a small rounded muscle and pronator means which brings about the pronation. So one muscle from the lateral side we start is a muscle named pronator teres, whose work is to produce pronation. Now the second is flexor carpi radialis. जहाँ पे word radialis unlaris आता है, that means radialis means on the lateral side and unlaris means on the medial side. ठीक है? It is acting upon the wrist, so the word carpi, and flexor because it is of flexor compartment. Then one lateral muscle will come which is a flexor muscle, flexor carpi radialis. Then the third one is palmaris longus. As the name suggests, longus means there is a long tendon. It is going straight towards the palm. Hence the name palmaris longus. It is a degenerating muscle. So basically if it is cut, no action is hampered. So this muscle, particular muscle runs straight in the hand. So यहाँ पे straight midline tendon जो दिख रहा है, it is of palmaris longus. Then the last one over here is flexor carpi ulnaris. Again, flexor compartment का muscle acting on the wrist and which is present on the medial side, flexor carpi ulnaris. Now intermediate group में, which is in most of the books is included in the superficial compartment only, flexor digitorum superficialis. The word digitorum means it is acting on the fingers, on the digits. So जहाँ digitorum आएगा तो वहाँ मतलब क्या है कि it is either producing flexion or extension of the digits. So word flexion is there, flexor digitorum, it is of superficial compartment to superficialis. Now deep group muscles, flexor digitorum profundus. It is a deeper muscle acting on the digits. So flexor digitorum profundus. Flexor pollicis longus, again a long muscle. Flexor compartment, pollicis means thumb. Okay, hallux toe और thumb के लिए we use pollex. ठीक है, so flexor pollicis which is acting on the thumb. So flexor pollicis longus. And then again there is a muscle quadratus. There is a square or a rectangular type of bend like muscle which is the main muscle that produces pronation. So pronator quadratus. Okay, so we have superficial group of muscle and deeper group of muscle. Superficial group of muscle consists of again pronator teres from lateral to the medial side, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi ulnaris. ठीक है, palmaris longus and flexor carpi ulnaris के बीच में present होगी flexor digitorum superficialis. Then deeper group में we have digitorum profundus, pollicis longus and quadratus, pronator quadratus. Now all these superficial muscles that we are talking about, all these have a common origin in front of the medial epicondyle of humerus. Okay, all these muscles have common origin in front of the medial epicondyle of humerus. So that particular point of origin is known as common flexor origin. ठीक है, तो common flexor origin कहाँ होगा? In front of the medial epicondyle. With the help of the fingers, the location of all these muscles have been denoted
from lateral to the medial side. Now all these muscles, as this is the compartment, front compartment which is supplied by the median nerve. Yes, at the time of the brachial plexus, I already told you that front of the forearm, it is supplied by the median nerve. So all these superficial group of muscles, these are supplied by the median nerve except flexor carpi ulnaris. Ulnaris थोड़ा medial side में आ गया, ulnar nerve medial side पे रहती है, so ulnar nerve will supply the flexor carpi ulnaris. As the word itself suggests, it is on the medial side, so it is not difficult to remember that all the superficial muscles of the forearm, they are supplied by the median nerve except flexor carpi ulnaris, which is supplied by the ulnar nerve. Now all these muscles, they cross the wrist joint except pronator. It's an oblique small muscle, pronator teres. So except pronator teres, all these muscle tendons cross the wrist joint. So here in the picture you can see the common flexor origin at the medial epicondyle, all the flexor muscles taking origin. In addition to this, also there are point of origin for certain other muscles जो इसके साथ साथ, क्योंकि कई मसल्स इसमें जिनके दो हेड है, ठीक है, so we will discuss it later. तो कॉमन origin जो इन सबका है वो है medial epicondyle. So there is a modification of the D fascia here in just the front of the wrist, which is known as flexor retiniculum. On the dorsal side, there is extensor retiniculum. Now, function of this retiniculum is hold the tendons of this flexor compartment muscles. यहाँ पे जो tendon आ रहे हैं सारे जो cross कर रहे हैं wrist को, उनको ये एक जगह बांध के रखता है flexor retiniculum. ठीक है? So medially it is attached to the pisiform and hook of Hammett, and laterally it is attached to the tubercle of scaphoid and crest of trapezium. These are the carpal bones. ठीक है? Medial side में pisiform रहती है, hook of Hammett. So medial side पे attachment is pisiform and hook of Hammett. On the lateral side it is attached to the scaphoid and trapezium. So what is the significance of flexor retiniculum? It binds, it holds the tendons, flexor tendons together. Now, as there is concavity here in front of the carpals, so there is a tunnel formed between the carpus and the flexor retiniculum, which is known as carpal tunnel, through which the median nerve passes into the palm. Okay? So this median nerve is present deeper to the flexor retiniculum, so there are chances of compression of the median nerve in the carpal tunnel that you are going to study later. Here you must know the attachment of flexor retiniculum and what is the function of it. Now muscles, superficial muscles, one by one we are going to discuss the origin and the insertion of these muscles. First of all, we have pronator teres. It's a small oblique muscle. It has two heads. Humeral head, जो कि common flexor origin होगा जिसका from the medial epicondyle, and a deeper ulnar head which takes origin from the medial margin of the coronoid process of the ulna. So we have two heads over here. One head is taking origin from the humerus and the second is taking origin from the ulna, from the medial margin of the coronoid process of the ulna. Now it will run downwards obliquely and get inserted in the middle 1/3 part of the radius. ठीक है, on the lateral surface of the middle 1/3 part of the radius. So origin इसका हो रहा है humerus और ulna से, और insertion इसका हो रहा है radius. It runs downwards and laterally get inserted in the mid shaft on the lateral surface of the radius. Nerve supply of pronator teres will be median nerve. Now action, as the name suggests, along with the pronator quadratus, it pronates the forearm. So there is no तकलीफ in this. किसी को कोई problem? नहीं? So it forms, it's an important boundary of the cubital fossa. Now the second is flexor carpi radialis. After pronator, this lateral muscle will be there, flexor carpi radialis. इसका जो एक ही origin है, which is taking origin from the common flexor part. Insertion कहाँ रहेगा? As you can see in the picture, first metacarpal को हटा दो तो base of the second and the third metacarpal पे ये
insertion लेगा. Okay, it will split into two and get inserted into base of the second and the third metacarpal. So it is running from the humerus till down. यहाँ पे कहाँ पे आएगा ये? second and base of the second and the third metacarpal. Nerve supply क्या रहेगा इसका? Median nerve. And as the name suggests, what is the action of this? See, carpi word आता है जिसका मतलब होता है wrist. Carpus means wrist. So as the name suggests, it is the flexor of the wrist. Okay. Along with brachioradialis, it also performs the action of the abduction of the hand. ठीक है, away from the midline. So main action जो है इसका flexion of the wrist, and second action इसका है abduction of the wrist or abduction of the hand. Now degenerating muscle palmaris longus 8 to 10% में ये absent रहता है. It has a long tendon which runs in the center and it gets inserted over here at the base of the palmar aponeurosis. This actually palmar aponeurosis is considered as the degenerating part of this palmaris longus muscle only. Okay. Now what is the nerve supply of this muscle? Median nerve. Action इसका क्या रहेगा? Flexion of the wrist. Now we have so many flexor of the wrist joint. So इसका action can be compromised. And for this reason, अगर हमें tendon graft की जरूरत रहती है, so this is one of the option. Okay, because the action is not missed, so we can use palmaris tendon of the palmaris longus for the grafting purpose. ठीक है? Origin इसका वही है, common flexor origin. Then we have flexor carpi ulnaris. Flexor carpi ulnaris will take origin from the common flexor tendon and ulnar head will take origin from the medial border of olecranon process and from the posterior border of the ulna. अभी और भी मसल्स आएंगी जिनका ओरिजिन जो है या तो olecranon process के medial side से या coronoid process के medial side. There are two processes. ulna देखा है आपने? The radius का जो head है, it is towards the proximal side and the head of the ulna is distally. ठीक है? So there is a notch in the ulna which is present on the proximal end, upper end, जो elbow joint बनाता है. So that notch is trochlear notch which is formed by the two process. The upper process is the olecranon process and the lower process is the coronoid process. ठीक है? And posterior border जो है इसका prominent रहता है. So this flexor carpi ulnaris, it takes origin, humeral head will take origin from the common flexor origin and the ulnar head will take origin from the medial side of this olecranon process and from the posterior border along the aponeurosis. एक aponeurosis attach होता है ulna के पीछे जिससे तीन muscles flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris, flexor digitorum profundus takes origin. Insertion, it will run medially and get inserted at the pisiform, hook of Hammett and base of the fifth metacarpal. So basically कहाँ पे होगा? मीडियल साइड पे. तो मीडियल साइड पे जो भी कार्पेल आ रहा है, पिसिफॉर्म आ रहा है, हुक ऑफ हैमेट आ रहा है और मीडियल साइड पे हमारी फिफ्थ मेटाकार्पल प्रेजेंट होती है. तो बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल पे जाके ये इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है? It is only exception which is supplied by the ulnar nerve. It is crossing the wrist joint, flexor carpi ulnaris. So what is the action? Main action will be flexion of the wrist and it also adducts the hand. Next, intermediate group of muscle, flexor digitorum superficialis. Digitorum यानी कि कहाँ तक जाएगा? डिजिट्स phalanx तक जाएगा ये. ठीक है? So it has a humero-ulnar head which takes origin from the common flexor tendon, then medial margin of the coronoid process, then a radial head also which takes origin from the anterior oblique line of the radius. As you can see in the picture, it is covering both radius and the ulna. ठीक है? तो ये ह्यूमरस से होता हुआ अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस से होते हुए रेडियस के एंटीरियर ओब्लिक लाइन ओरिजिन लेते हुए, तो इट बेसिकली इट फॉर्म्स अ टेंडिनस आर्च. यहाँ पे एक टेंडिनस आर्च बन जाता है, ऐसे कॉन्केविटी बन जाती है जिसके अंदर मीडियन नर्व और अल्नर नर्व लाई करती है.
ठीक है. So downwards, now it will split into 4 tendons. Medial 4 जो है digits पे इसका insertion होगा. thumb को छोड़ दो आप. ठीक है. तो कहाँ तक जा रहा है अब ये, कौन सी phalanx तक जा रहा है? ये जा रहा है अपने proximal में, ये जा रहा है अपने base of the proximal phalanx. Base of the middle, no not middle, proximal phalanx तक जाएगा. फिर इसको क्रॉस करेगा, वो होगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. नाउ ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स के जो डिस्टल एंड पे इंसर्ट हो रहा है, सो इट विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. ये 2 स्लिप्स में स्प्लिट होके एंड देन द साइड्स ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पे ये इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है. और the shaft of base of the middle phalanx, it's crossing the proximal phalanx and getting attached to the base of the middle phalanx. So basically purpose क्या है? It is actually giving passage to the tendon of flexor digitorum profundus. Again another digitorum will come, it gets inserted on the distal phalanx. So splitting of this will help in the passage of the tendon of FDP. ठीक है. So what is the origin of this muscle? Humerus, ulna and radius. Then splits into 4 tendons. Medial 4 जो अपने digits है वहां पे जाएगा. नाउ इसके अंदर भी इसके जो 2 स्लिप्स है, यानी कि मिडिल एंड रिंग फिंगर, दे आर सुपरफिशियल एज कंपेयर टू द टेंडेंस ऑफ द इंडेक्स एंड द रिंग फिंगर्स. ठीक है. थोड़ा सा उससे सुपरफिशियल रहते हैं आपस में अगर इनका कंपैरिजन करें. एंड देन दे विल स्प्लिट इनटू 2 स्लिप्स एंड गेट अटैच्ड टू द बेस ऑफ द मिडिल phalanx. Now what is the nerve supply of flexor digitorum superficialis? Median nerve. So as it is crossing the joints, it is crossing the metacarpophalangeal joint, it is crossing the proximal interpharyngeal joint. So what kind of movement it is going to produce? हाँ, तो इसका मेन एक्शन है PIP पे, proximal interpharyngeal joint. It brings about the flexion. Along with it, it also brings about the flexion of the metacarpopharyngeal joint. Now muscles of the deeper compartment. यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ, सारी मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन सबको समझ में आया? So next is flexor digitorum profundus. It's a large muscle. It is taking origin from ulna. ठीक है. अब ulna पे भी पूरी तरफ से ये origin ले रहा है. It is taking origin from the interior surface of the ulna, from the medial surface of the ulna, from the medial side of the olecranon process and the coronoid process, and also from the posterior border of the ulna, along with the aponeurosis. जो आप मैंने बताया कि 3 मसल को ओरिजिन देगा, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. देन इंसर्शन इसका कैसे होगा? अगेन इट विल स्प्लिट इनटू दी 4 टेंडेंस, देन इट विल पास below the slips of the flexor digitorum superficialis and get inserted at the base of the distal phalanx. As it is crossing the distal joint, interpharyngeal joint, so it will bring about the flexion of the DIP, distal interpharyngeal joint. It is crossing the this proximal phalanx also and metacarpopharyngeal joint also, so it will bring about flexion of the metacarpopharyngeal joint and PIP also. ठीक है. Now what about the nerve supply? Now this muscle is a hybrid muscle. Hybrid का मतलब क्या है? It has 2 nerve supply. The medial side, medial part of FDP, it is supplied by the ulnar nerve, and the lateral side is supplied by the anterior introitious nerve, which is the branch of median nerve. So deeper compartment is basically supplied by the anterior introitious nerve. Superficial पूरा अपन ने पढ़ा median nerve, and deeper is supplied by anterior introitious nerve. Exception is the medial part of the FDP, which is supplied by the ulnar nerve. Next is flexor pollicis longus. ठीक है. Anterior surface of radius से origin लेगा, and introitious membrane runs downwards over the carpus and get inserted at
base of the distal phalanx of the thumb. So it is crossing all these joints, it will bring about the flexion of the metacarpopharyngeal interpharyngeal joints of the thumb. Because हमने देखा चारों टेंडन जो है वो मीडियल साइड पे अटैच हो रहे थे, तो थंब का जो मूवमेंट है इट विल ब्रिंग अबाउट बाय द FPL, फ्लेक्सर pollicis longus. Now nerve supply of flexor pollicis longus is anterior introitious nerve. Pronator quadratus, this is a band-like muscle taking origin from the anterior surface of the ulna, getting inserted over the anterior surface and the interior border of the radius. ठीक है, ऐसा quadrilateral band-like muscle है. As compared to FDP and FPL, it is deeper to these two muscles. ठीक है, ये दोनों जो muscles हैं as compared to pronator quadratus, they lie at a high superficial level. इनको भी अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो नीचे हमें ये बिल्कुल बेंड लाइक मसल ऐसा ही दिखेगा, ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस. अब इसका नर्व सप्लाई इज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ मीडियर नर्व एंड एक्शन इसका क्या रहेगा, इट प्रोनेट्स द फोरआर्म. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स द मस्कुलर पार्ट ऑफ द फोरआर्म. सो अ क्विक रिविजन अबाउट द मसल्स ऑफ द फोरआर्म. ठीक है, we have divided them. चलो हम इसको इंटरमीडिएट को एक बार, हमें पता है कि इंटरमीडिएट पे FDS है, बट ब्रॉडली वी डिवाइड देम इनटू सुपरफिशियल एंड दी डीप कंपार्टमेंट. ठीक है, नाउ इन द सुपरफिशियल कंपार्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल साइड वी हैव प्रोनेटर teres, then we have flexor carpi radialis, then palmaris longus, देन FDS. इस इंक्लूड अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे तो ये दोनों के बीच में है, पामरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के बीच में एक बल्कि मास मसल दिखेगी विच इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड द मोस्ट मीडियल इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. once you remove the fascia you must be able to see all these muscles. ठीक है, now all these muscles of the anterior compartment, these are supplied by median nerve. ठीक है, except flexor carpi ulnar, flexor carpi ulnaris which is supplied by ulnar nerve. ठीक है, इन सब का कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन कहाँ है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन medial epicondyle of humerus. ठीक है, then you must remember there are two heads of pronator teres, एक humeral head and एक ulnar head. Humeral head the common flexor, ulnar head from the coronoid process and insertion इसका हो जाएगा mid shaft of the radius. Then we have flexor carpi radialis, common flexor origin, base of the second and the third metacarpal पे insertion. Then we have palmaris longus, common flexor origin, insertion, base of the palmar aponeurosis. When you expose this, there will be a triangular aponeurosis present here, which is considered as the part of this tendon muscle only, palmaris longus. Then we have flexor digitorum superficialis. It is taking origin from the common flexor origin and also from the coronoid process of the ulna, and then it runs towards the radius, anterior oblique line on the radius, and get inserted. While insertion, it splits into four tendons. It gets then these four tendon, each of this tendon divides into two slits and get inserted over the base of the middle phalanx. ठीक है, then we have flexor carpi ulnaris which is taking origin from common flexor, दो head है इसके. ठीक है, then also from olecranon, medial surface of yes, also from the posterior border of the ulna. Then insertion इसका कहाँ होगा, क्योंकि medial side पे run करिए pisiform, hook of hamate and base of the fifth metacarpal. Now इन सब का एक्शन जो है फ्लेक्शन एक्शन रहेगा, डिपेंड्स कि कौन कौन सा जॉइंट क्रॉस करके इंसर्शन ले रहा है. ठीक है, सो एक्शन ऑफ प्रोनेटर टीरीज, इट्स ओनली मसल दैट डज नॉट क्रॉस द रिस्ट जॉइंट इन द सुपरफिशियल कंपार्टमेंट. एक्शन ऑफ प्रोनेटर टीरीज इज प्रोनेशन. एक्शन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस इज flexion of the wrist.
रेडियालिस का एक एक्शन और है एबडक्स दी हैंड, एंड अल्नारिस का एक और एक्शन है इट अडक्ट्स दी हैंड। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस डिजिट्स, यानी कि मेन एक्शन इसका पीआईपी पे रहेगा। फ्लेक्शन ऑफ दी पीआईपी का फुल फॉर्म इज proximal interpharyngeal joint. It is crossing metacarpopharyngeal joint, little bit flexion over here also, and of the wrist joint, क्योंकि इस joint को ही क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो थर्ड एक्शन इसका ये भी हो सकता है, brings about the flexion of the wrist joint. ठीक है, देन और क्या बच गया अपने कंप्लीट। अब आते हैं डीप मसल्स, एफडीपी, एफपीएल एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। चलो सबसे इजी मसल से स्टार्ट करते हैं। प्रोनेटर क्वाड्रेटस इंटीरियर अल्ना से स्टार्ट होगा और इंटीरियर रेडियस पे जाके इंसर्शन हो जाएगा। ठीक है, बेन लाइक मसल है। अब डीप का ये याद रखना है क्योंकि एक ब्रांच होती है डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व विच इज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो डीपर कंपार्टमेंट की जो नर्व होगी इट इज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ओके, तो डीपर कंपार्टमेंट में सबसे पहले अपन प्रोनेटर क्वाड्रेटस सप्लाइड बाय एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, प्रोनेशन of the forearm. Then FPL, as the name suggests, it supplies the thumb. FPL, ठीक है, it is also taking origin from the ulna and the radius, then going downwards get inserted distal phalanx of the thumb. ठीक है, अब इसका nerve supply anterior introitious nerve crossing all these joints, so brings about the flexion of the interpharyngeal joint of the thumb, metacarpopharyngeal joint of the thumb. ठीक है, देन द लास्ट इज एफटीपी, डीपर डिजिटोरम मसल फॉर द डिजिट्स। ठीक है, इसका पूरा अल्ना का सरफेस ले लो, एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर बॉर्डर, ऑल्सो फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ ओलेग्नोन प्रोसेस से कवर करते हुए इट विल गेट इंसर्टेड, divides into four tendon, passes through the slips of the flexor digitorum superficialis, base of the distal phalanx पे जाके इंसर्शन लेगी of the medial four digits except thumb. Now it is a hybrid muscle. It is supplied by the two nerves. Medial side of FDP supplied by ulnar nerve and lateral side is supplied by the anterior introitious nerve. ठीक है, समझ में आया इतना? अब अपने आप एक रीडिंग लगाओगे you will understand. अब हमारे बचती है इस कंपार्टमेंट में आर्टरी एंड नर्व। ठीक है, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी एंड थ्री नर्व। जहाँ जहाँ कंपार्टमेंट पढ़ेंगे वहाँ वहाँ उस नर्व का कोर्स आप पढ़ते जा रहे हो। जैसे यहाँ पे आपका हो गया ब्रेकियम में, अभी आप फोर आर्म तक का कोर्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आर्टरी देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट कवर करेंगे इनको। रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी। क्यूबिटल फोसा पढ़ा था सबने। क्यूबिटल फोसा के अंदर ब्रेकियल आर्टरी, इट splits into two terminal branches, ulnar and the radial artery, in front of the neck of the radius. ठीक है, सो लैंडमार्क एरिया कहाँ है, दोनों का ओरिजिन जो है वो कहाँ हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ द नेक ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियल आर्टरी जो है वो इस यहीं पे इस पिक्चर में ही आप कोर्स देख सकते हो। रेडियल आर्टरी इट लाइज बिलो ब्रेकियोरेडियालिस मसल। ठीक है, हैव यू सीन क्यूबिटल फोसा डिसेक्शन करा है आपने? तो आप लेटरल बाउंड्री देखेंगे ब्रेकियोरेडियालिस, उसको लिफ्ट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू सी रेडियल आर्टरी, और उसके लेटरल में रहती है अपने सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। नाउ दिस आर्टरी टेक्स अ कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द लेटरल साइड, रन्स डाउनवर्ड्स, ओके, एंड देन इट लाइज just lateral to the tendon of flexor carpi radialis. Now you all do one thing, you just raise your wrist, okay? अभी मैं टेंडन आपको बता चुकी हूँ कि एक टेंडन पामरिस लॉन्गिस का होता है और लेटरल साइड पे टेंडन होता है अपना किसका, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। तो इस टेंडन के बाद में एकदम से एक डिच आएगा। सो यू होल्ड योर 3 fingers over here and feel your pulse. Can you feel your pulse now? Yes, this is radial pulse. And why you are able to feel this pulse? As this artery is lying below the muscles in the proximal part, but in the distal part it is only covered by the skin, superficial fascia and aphasia. So here it is easily felt. So this particular part is used to count the pulse rate. Okay, you don't have to use thumb because फिर confuse हो जाओगे खुद के pulse से, thumping होती है इसमें भी, so you have to use your finger. ठीक है, पहले हमें पता था ये चीज, पर हम कभी यहाँ करते हैं यहाँ करते हैं। नाउ यू कैन जस्ट गो स्ट्रेट
lateral to the tendon of the flexor carpi radialis, you will be able to feel the radial pulse. Now here in the wrist, it crosses the flexor retinaculum superficialis. It enters into anatomic nerve box and then it disappears between the two dorsal interosseous muscles. तो आप हैंड में देखेंगे इसका कोर्स जो भी है. अब यहाँ पे ये ब्रांचेस क्या क्या दे रहा है, मस्कुलर ब्रांचेस दे रहा है लेटरल साइड में मसल्स को, ठीक है. एक टर्मिनल सुपरफिशियल पामर ब्रांच देगा यहाँ पे. यहाँ एक आर्च बन रहा है distally in the palm over here. This is a superficial palmar arch which is formed by the superficial palmar branch of the ulnar artery and superficial palmar branch of the radial artery. So it gives a terminal superficial palmar branch to complete the palmar superficial palmar arch in the palm. ठीक है. तो बाकी एक रेडियल रिकरेंट ब्रांच भी देता है ये, which again goes upwards and participate in the anastomosis around the elbow joint. So it has muscular branches, radial recurrent branches, superficial palmar branch and palmar carpal branch. Wrist में it also gives blood supply, so it has a carpal branch. So this is the course of the radial artery. Now relation of the radial artery upwards in the proximal part, anteriorly brachioradialis. अब पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर ये जिन मसल से रिलेशन में रहता है उसको हम बोलते हैं रेडियल बेड और रेडियल आर्टरी बेड, ठीक है. तो वो अगर हम बात करें सबसे पहले आएगा बाइसेप्स का टेंडन, ठीक है. टेंडन्स ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, देन सुपिनेटर, देन प्रोनेटर टीरीज एंड लास्ट में आपके आ जाएगा ये एफडीएस और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, ठीक है. तो क्या क्या रहेगा अपना यहाँ पे, बाइसेप्स टेंडन, सुपिनेटर, प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस. और ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस से फिलेटरली मूव करते हुए नीचे it will be only covered by the skin, superficial fascia and deep fascia, ठीक है. So these are the relations, branches and the course of the radial artery. समझ में आ गया सबको. Now the second is ulnar artery, ठीक है. दोनों they are given in front of the neck of the radius in the cubital fossa, 1 centimeter below the elbow line. So now this radial artery will run downwards obliquely towards the medial side and in the distal half it will run straight vertically, ठीक है. It will again cross the flexor retinaculum superficially and then it will give a terminal branch. It gives two terminal branches, superficial palmar and deep palmar branch. The superficial palmar branch will continue and form the superficial palmar arch along with the radial artery. It also gives muscular branches. Then it also gives collateral branches that runs upwards, anterior and posterior ulnar collateral artery. Have you read anastomosis around elbow joint? So ulnar collateral artery. Then it gives common interosseous artery. Now this common interosseous artery is again dividing into, इसका picture बाद में देखेंगे. It again divides into anterior and posterior interosseous artery. Anterior interosseous artery will run with the anterior interosseous nerve here in the anterior compartment, straight over here, ठीक है. ये क्या है अपने इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी रन करेगी, पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी पीछे की तरफ चल जाएगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में रन करेगी, ठीक है. सो हियर द मेन थिंग दैट यू हैव टू नोट इट डाउन इज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इज द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है. एंड एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी which is the branch of ulnar artery. Okay, so anterior interosseous artery is indirectly the branch of ulnar artery. So it gives interosseous and then it gives cutaneous and palmar carpal branches as that of radial artery. Okay, so these are the course, branches and relations. Now what are the relation of the ulnar artery? Ulnar artery जो है यहाँ run कर रहा है between flexor carpi ulnaris and FDP, ठीक है. फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस सुपरफिशियल, पोस्टीरियरली FDP. फिर ये भी लाइक रेडियल आर्टरी इन द डिस्टल हाफ इट विल बिकम सुपरफिशियल, ठीक है. देन इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मसल, इट इज ओनली कवर्ड बाय स्किन एंड फेशिया. देन क्या हुआ इसको, अरे इतना अंधेरा क्यों हो गया. क्या बताया था मैंने अभी, रिलेशंस. अपर पार्ट में इट इज रिलेटेड टू, नींद आ गई इसको भी.
Wait. So course of the radial artery, we have discussed course of radial and the ulnar artery. Small terminal, दोनों आपको पता होना चाहिए कि these are the terminal branch of the brachial artery. The minute detail you can go and read. तो यहाँ पे crux है that you should know. Terminal branches of the radial artery, point of origin in front of the neck of the radius, will run laterally, convexity towards the lateral side, and it can be felt lateral to the flexor carpi radialis tendon because it is superficial over here, है ना? It is only covered by the skin and the fascia on the lateral aspect. Radial bed आपको बता ही दिया, it is formed by the bicep tendon, supinator, pronator, teres and flexor carpi radialis. These are the branches and the course of the radial and the ulnar artery. In the hand, this radial artery will turn towards the dorsum and then it will lie in the anatomic nerve box that you are going to study tomorrow in the dorsum of the head. ठीक है, एनाटॉमिक नर्व बॉक्स का जो मेन कंटेंट है, इट इज रेडियल आर्टरी अलोंग विद द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व एंड सेफेलिक वेन. Relation, it is overlapped by the brachioradialis, posteriorly by all these muscles, laterally brachioradialis, medially pronator teres. It has a muscular branch to the lateral side of the muscles, radial recurrent, which go upwards and supply an elbow joint. So it participates in the anastomosis around the elbow joint. And it has superficial palmar branch, which participate in the formation of palmar arch. Ulnar artery, terminal branch of one of the terminal branch of the brachial artery given in front of the FDP and behind flexor carpi ulnaris. ये relation क्यों important है? So that you can should be able to dissect also. आपको अगर locate करना है ऊपर से लेके नीचे course इसका, so you have to locate it below the flexor carpi ulnaris. Now relation of the median nerve and the ulnar nerve with the ulnar artery. So this median nerve, first it is lying medial to this artery, ulnar artery. It will cross to the lateral side. But one muscle, that is deeper head of the pronator teres, is separating ulnar artery from the median nerve. Okay. So median nerve का course इसके relation में क्या रहेगा? Ulnar artery के relation में first it is medial to the artery, then it crosses and comes to the lateral side, and these two structures are separated by the deep head of the pronator teres. Ulnar nerve और ulnar artery का क्या relation है? Ulnar nerve will also, it will lie medial to the artery, यानी कि ulnar nerve के lateral में ulnar artery रहेगी. Medial most structure जो यहाँ रहेगा वो है अपना ulnar nerve. Now relations, anterior relation, it is covered by the superficial muscles. जो भी आपने पढ़ी हैं अभी, pronators and flexor carpi, all these muscles covers the ulnar artery. These all are the anterior relation of this. Then posterior, it is related to flexor digitorum profundus downwards, and upwards it is related to brachialis. Brachialis ऊपर की तरफ और नीचे FDP. Now medial relation, it is related to ulnar nerve and tendon of the flexor carpi ulnaris. So median most structure here in the wrist is the tendon of flexor carpi ulnaris. So it gives, ये ऊपर की तरफ जो branch आ रही है, they are the collateral branches participating in the anastomosis around elbow joint. Muscular branches देखा ये medial side पे. Common introitious artery, which जैसे ही arise होगी, it will divide into anterior and posterior. Anterior will run on the interior surface of introitious membrane, ठीक है, and then it pierces just above the pronator quadratus. It pierces the fascia, enters the posterior and anastomoses with the posterior introitious artery. An anterior and posterior carpal branch and the terminal branch are superficial and deep palmar.
Now what about the nerves? Median nerve, ulnar nerve and the radial nerve. So we will have a quick look out. मीडियन नर्व, सबसे पहले मीडियन नर्व, हमें पता है कि मीडियन नर्व जो इसकी मेन नर्व है फोर आर्म के, फ्रंट ऑफ फोर आर्म. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. चुप रहो अभी 5 मिनट के लिए. हाँ, तो आप इसको लोकेट करने के लिए क्या करोगे? मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर है क्यूबिटल फोसा में. जैसे ही ये क्यूबिटल फोसा में एंटर होगा, इट विल पियर्स द 2 हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज. ठीक है, इट विल पियर्स द 2 हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज. देन इट पासेस अंडर सरफेस ऑफ एफडीएस एंड अबव द एफडीपी, यानी कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियली, दोनों डिजिटोरम के बीच में ये पास होगा. फर्स्ट इट विल पियर्स द प्रोनेटर टीरीज, देन इट विल पास बिटवीन द डिजिटोरम्स एफडीएस एंड एफडीपी के बीच में. लोअर डाउन रिस्ट के ऊपर मैंने बताया कि जो मेन इसका ट्विग है दैट विल पास बिलो दी, मेन जो इसका कंटिन्यूएशन है इट विल पास बिलो द फ्लेक्सर रेटिनिकुलम. ठीक है, सो इट विल इमर्ज फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ एफडीएस, देन इट विल लाई behind the tendon of the palmaris longus, then it passes beneath the flexor retiniculum and enters into the palm. So इसका whole soul relation किस किस से है? Pronator teres, FDS, FDP, then palmaris longus के पीछे flexor retiniculum के नीचे से पास होते हुए it will enter into the palm. Now supply superficial. ठीक है, now तो इसकी muscular branches हो गई जो कि डायरेक्ट सप्लाई कर रही हैं सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म मसल्स को. देन इट हैज अनदर डीपर ब्रांच विच इज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व. ठीक है, नाउ दिस एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व अलोंग विद द एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी इट रन्स इन फ्रंट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन एंड इट विल सप्लाई द डीपर ग्रुप मसल्स. ठीक है, ऑल्सो दीज नर्व्स जिस जॉइंट से पास होती हैं उस जॉइंट को आर्टिकुलर सप्लाई भी देती है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से जॉइंट को देगा? ये एल्बो जॉइंट को एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को डायरेक्ट ब्रांच आएगा फ्रॉम द मीडियन नर्व एंड दिस इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इज सप्लाइड बाय द ब्रांच फ्रॉम द इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व. ठीक है, देन इट हैज क्यूटेनियस ब्रांचेस. I already told you in the brachial plexus chapter that this thenar eminence and this mid side of the palm, this is supplied by the median nerve, and it also gives some communicating branches to the ulnar nerve. So this is all about the median nerve. अब इसको लोकेट करने के लिए स्ट्रेट आपको देखना है. ठीक है, पहले तो ये इसको पियर्स करते हुए आएगी, then you cut the flexor digitorum superficialis. So it will lie over the surface of FDP in the center. That is why the term median. Median का मतलब ही क्या है? Center. तो center में जो nerve पास हो रही है that is median nerve. Ulnar nerve. Now जैसे कि वो pronator teres को pierce करती है वैसे ही ulnar nerve it enters the forearm and it pierces or it passes between the 2 heads of FCU, that is flexor carpi ulnaris. दोनों हेड बताए थे इसके भी, flexor carpi humeral ulnar head. So in upper half it rests on the FDP only and is covered by the flexor carpi ulnaris. So here on the medial side, क्योंकि ये FDP is very broad muscle, तो लेटरल साइड पे तो अपने मीडियन नर्व है और मीडियल साइड में इसके क्या रन कर रही है? अल्नर नर्व विच इज कवर्ड बाय द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस. Now in the lower half it runs lateral to the tendon of flexor carpi ulnaris and medial to the ulnar artery. Then it enters the palm on the lateral side of the pisiform above the flexor retiniculum. Radial nerve and ulnar nerve both passes above this retiniculum. Only median nerve passes below the retiniculum. Then terminally divides into superficial and the deep terminal branches. Now main muscular branches, it supplies directly to the FCU, flexor carpi ulnaris, and medial half of FDP, hybrid muscle. Articular branch to the elbow. Then dorsal branch, a small twig is also given to the dorsum of the hand, and palmar cutaneous branch which supplies the hypothénar part of the palm. This one, okay? And obviously here thenar muscles are supplied to the median nerve and hypothénar muscles are supplied by the ulnar nerve. So what is the course over here? FCU को pierce करेगी, ठीक है? Then
FCU एंड FDP के बीच में रन करेगी, lies lateral to the flexor tendon of flexor carpi ulnaris, passes superficial to the flexor retinaculum. Now the last one is radial nerve. Again, in the cubital fossa, most lateral content here is radial nerve. It is coming from the posterior cord, remember? So फिर ये गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है ये? Posterior compartment में, lie in the spiral groove. Then again it enters in the cubital fossa by passing in front of the lateral epicondyle. ठीक है, अब ये नजर कैसे आएगा आपको यहाँ पे cubital fossa के अंदर? क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा ब्रेकियोरेडियालिस को लिफ्ट करना रहेगा, देन यू बी एबल टू सी रेडियल नर्व. अब जो ब्रेकियोरेडियालिस के ऊपर जो दिख रही है आपको नीचे, दैट इज अ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व. जैसे ही रेडियल नर्व यहाँ पे एंटर करता है अराउंड द एपिकॉन्डाइल, देन इट डिवाइड्स इनटू डीप एंड सुपरफिशियल. नाउ दिस डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, इट पियर्सेस सुपिनेटर मसल व्हिच फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द क्यूबिटल फोसा. ठीक है, सुपिनेटर मसल को पियर्स करके इट विल एंटर द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड इट विल कंटिन्यू एज पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व. So here again the thing to be noted, anterior introitious nerve is the branch of median nerve, posterior introitious nerve is the branch of, is a continuation of radial nerve, or it is a deep branch of the radial nerve. ठीक है, and superficial branch you will be able to see in the cubital fossa just below the brachioradialis and above the brachialis muscle on the lateral side. ठीक है, then it runs downwards. Again anatomic nerve box में superficial branch रहेगा and it supplies the lateral half of the dorsum of the hand, lateral 3.5 digits. Proximal phalanx sac, it is supplied, cutaneous supply is by the radial nerve. So D branch is posterior introitious, supplying the posterior compartment. Superficial branch is also called superficial radial nerve, contributes to the cutaneous innervation of the dorsum of the hand. So this is the course of all these. यहाँ तो relation अपना cubital fossa के अंदर है, थोड़ा सा you lift and you will see. So this particular is superficial branch and ये जैसे ही arise हुआ deep, it will pierce. किसको pierce करेगा यहाँ पे? Supinator muscle. ठीक है. Now what are the tendons and the structures passing the wrist? पूरा complete हो गया ना? ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखे, पास कर रहे हैं रिस्ट को. तो क्या क्या स्ट्रक्चर है फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड दैट यू हैव रेड इन दिस लेक्चर? फ्रॉम लेटरल टू द एनीवन रेज योर हैंड इन द सीक्वेंस यू शुड नो. सबसे लेटरल मोस्ट क्या पढ़ा आपने अभी? रेडियल आर्टरी से भी कुछ लेटरल है. यस, रेडियल नर्व सबसे लेटरल मोस्ट है, देन रेडियल आर्टरी. ठीक है, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द लेटरल साइड, रेडियल नर्व, देन रेडियल आर्टरी, देन प्रोनेटर टीवी से खत्म हो गई ऊपर ही. इट विल नॉट क्रॉस रिस्ट, अभी तो पहले बताया था कि फिर उसके बाद में फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, देन सेंटर में टेंडन क्या रहता है? पामरिस लॉन्गस. तो पामरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस के बीच में क्या रहता है? मीडियन नर्व. ठीक है, देन वी हैव डिजिटोरम टेंडेंस थोड़े इनसे डीप रह जाएंगे पामरिस के नीचे. उसके बाद में बताओ, पामरिस के बाद में फिर लॉन्गेस्ट के बाद अब अल्नर आर्टरी. हाँ वो सब हो गया, चलो वो टेंडेंस तो अपने आगे आगे चलो. ये तो सेंटर से क्रॉस करेंगे वैसे भी. देन और मीडियल अगर हम जाते हैं तो क्या रहेगा? अल्नर आर्टरी का क्या रहेगा, अल्नर नर्व का क्या रहेगा, और लास्ट में टेंडन किसका रहेगा? तो अल्नर आर्टरी या अल्नर नर्व? पहले अल्नर आर्टरी, फिर अल्नर नर्व एंड देन फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस.
So these are the structures that pass in front of the wrist. So अगर कोई suicidal attempt करता है यूनी अपनी कलाई काट दी तो क्या होता है, कौन से स्ट्रक्चर, अगर रेडियल साइड से कट करेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा और अगर मीडियल साइड से कट करेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा? यस, अगर रेडियल साइड से तो नाउ वी नो कि ये टेंडेंस जो है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, ये पैमरिस लॉन्गस तक जो है वो स्ट्रक्चर्स डैमेज होने के चांसेस हैं इफ इंजरी इज टू द मीडियल साइड. तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन, अल्नर आर्टरी यू डोंट हैव टू अप्लाई इट, है ना. फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, देन वी हैव अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरी. चलो, खत्म नहीं हुई है क्लास. मुझे सिर्फ ये 3 रिलेशन बता दो. हमने मसल्स पहले ही रिवाइज कर लिया था, लास्ट में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स रिवाइज करे, तो कुछ रिलेशंस जो आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले तो बताया था टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल आर्टरी कौन से रिलेशन पे देगा, नेक ऑफ द रेडियस. ठीक है, रेडियल आर्टरी इन रिलेशन टू फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, इट लाइज लेटरल टू इट और मीडियल टू इट. फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के लेटरल पे रहेगा रेडियल आर्टरी. देन मीडियन नर्व किसको पियर्स करेगा यहाँ पे क्यूबिटल फोसा में, कौन सी मसल को पियर्स करेगा? पे अटेंशन, टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टेरिस. एंड अल्नर नर्व किसको पियर्स करेगा? अल्नर नर्व सुपिनेटर तो अभी डिस्कस करेंगे. मीडियल साइड पे कौन सी है टेंडन, मसल कौन सा है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. तो इट विल पियर्स टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. Radial nerve, as soon as it enters, crosses the lateral epicondyle, it will divide into superficial and deep. Now this deep branch will pierce supinator and continue posteriorly as posterior introitious. Anterior introitious nerve is a branch of median nerve. Anterior introitious artery is the branch of nerve ulnar, yani common introitious artery, which is branch of ulnar artery. Then posterior introitious is the branch of